As you can see on the board, Silk Road. This is last chapter of Hornbill book. This chapter, as I told you that this chapter is narrated by Nick Middleton. The moment when he decides to make a Korah around Mount Kailas. First of all, let you know the procedure of Korah. Korah is the process in which people confidently make around Mount Kailash in order to receive and pleasure by Lord Shankar. Now, let us know the explanation. I was explaining page number 75. I hope you all have had your book before you. Now, let's know the explanation from the gently rolling hills of Rao. Okay, from the gently rolling hills of Rao, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures from before bounding away into the white. From the gently rolling hills, you can say hills, rolling hills, we could see. What could they see? It was the hill of Raut. Okay, as I told you that Raut was the place where the narrator started his journey from, uh, bidding goodbye to a girl whose name is Lemon. Okay, Lemon was the girl who departed the narrator Nick Middleton, his companion Daniel, and car driver Satan. Okay, there are three main characters in this chapter, as I have told you at the very beginning when I started to explain this chapter. Now, what could they see? They could see a few gazelles when they took shortcut from Rao. जब उन्होंने राव से शॉर्टकट लिया, they see, you know, gazelles, a few gazelles, you can say deer. Okay, the meaning of gazelles, the meaning of gazelles, uh, deer. Okay, deers, you can say heron, nibbling. They would look from nibbling. Nibbling, you can say trimming something, grazing. कुतरना जिसको बोलते हैं, the arid pastures, you can say withered grass, dry grass. Okay, means the narrator and his companion along with Shaitan could see some deers who were grazing dry grass, and from, you can say, vanished before bounding away into the wild, and they vanished, they disappeared, within a few seconds from there. मीन्स नरेटर बताते हैं कि जब उन्होंने राव से शॉर्टकट लिया, तो शॉर्टकट के दौरान उन्होंने बहुत ही expanded plain, that was a vast plain, in which they could see gazelles, deers. They were grazing grass, withered grass, and they vanished from there within a few moments when they saw the running car. Next, further on, आगे, where the plants become more stony than grassy. फर्दर आगे की बात बताते हैं, जहां पे रास्ते मोर स्टोनी देन ग्रासी, इट बिकम्स मोर स्टोनी देन ग्रासी वेज. व्हाट डिड दे सी? वो क्या देखते हैं? अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस, जंगली गधे, came into view. They could see a great herd in which large numbers of wild asses were grazing. बहुत सारे गधे वहां पे थे. And Shaitan told us, the driver told the narrator, that they were approaching them long before they appeared. Means we are seeing them later. It's very late for us to see then they appeared from. जब से वो यहाँ पे हैं, जब से वो अपीयर हो रहे हैं, हम बहुत ही देर है इनको देखने में. I mean, देर से हम देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ पे अपीयर हैं, and they are known as क्या? इनको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? Now he said, pointing towards a far off pile of dust. Now
The driver Chetan pointed out towards a heap of dust, foul dust, invisible. You can say yellowish heap of dust. पीले कलर का डस्ट का हीप उठ रहा था. उस डस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए चेतन जो कार का ड्राइवर है वो नरेटर को इंडिकेट करता है. क्या बताता है? When we drew near, और जब हम उस हीप के बहुत नजदीक पहुंचते हैं, I could see the herd galloping and mashing, wheeling and turning in tight formation, and as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Okay, predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp clean air. Now, I could see a herd of gallant and mashi, you can say, wild horses. Okay, जो जंगली घोड़े होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सा विशाल हर्ड देखने में आया, नजर में आया, came into view to the narrator, and they were wheeling and turning. They were, running in a circular motion. They were turning, they were playing. वो दौड़ रहे थे, गोल गोल दौड़ रहे थे. As if ऐसा लग रहा था that they were practicing maneuvers. Means they were practicing the moment to make them able to fight on the border. Okay, as you can say, drifting. You can see drifting. What is drifting? To practice for fighting. You can say a training before going to fight on the border. Drifting कहना उसको कहते हैं. तो they were practicing as maneuver and some predetermined course. Predetermined means pre-resolute or you can say already decided act of something. किसी भी चीज को पहले से decide कर लेना या determine कर देना कि हाँ हम इस चीज को करेंगे ही करेंगे. So as if they were fighting and practicing, training you can say, for predetermined course to fight on the border, and plumes of dust billowed into the crisp clean air. Okay, and by the training and drifting of those horses, it seems that the dust, plumes of dust, you can say, scraps of dust were billowing, you can say, mixing up into the crisp of air. हवा में वो जो धूल थी वो उड़ रही थी. ठीक है. So what did the narrator saw in this paragraph? Firstly, he saw some nibbling gazelles, सूखी घास चढ़ते हुए हिरण को देखा. Thereafter he saw wild ass, वो जंगली गधों को देखा. And Chetan told the narrator that they are approaching here. You can say before they appeared, they came into view. Means वो बहुत पहले से यहाँ पे है, बाद में हम लोगों ने उनको देखा है. ये दो चीज. And third thing which the narrator saw over there, the horses, okay, as if they were practicing or giving training to fight on the border. And by the training, by the drifts of those horses, the air was being mixed with the scraps of dust and it was polluting the air, and nothing was visible properly. बहुत सब कुछ अच्छा नहीं था या फिर visible नहीं था उस धूल के मिलने से. Now as hills started to push up once more from the rocky wilderness, as जैसे ही hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbas tending their flocks. Thereafter, when they moved forward from there, they could see drogbas. What is the meaning of drogbas? You can see Drogbas की मीनिंग क्या होती है? The people are the person who exist in jungles, forests, okay, जिनको हम बंजारे समझते हैं, बंजारे कहते हैं. Tending their flocks, और वो अपने जानवरों को क्या कर रहे थे? चरा रहे थे. ठीक है. They were tending their flocks, their animals over there, and sometimes men and sometimes women. कभी-कभी महिलाएं दिखती थी, कभी-कभी आदमी दिखते थे. Means both of them were tending their flocks there, and these were well-wrapped figures could pause and stare at our car. And the narrator describes that these well-dressed appearance of men and women of Drogbas were sometime passing their way. You can say they were staying for a while. They were staring at our cars. वो अपने कार के तरफ बताते हैं कि वो रुकते थे और हमारी कार को स्टेयर करते थे, घूर के देखते थे. That who are they?
वो कौन है, कौन जा रहा है यहाँ से. Now occasionally the ship would take when the track took us close to their animals, and when the track, moving further, we became very close to their animals. The ship, जो भेड़ थी सर, would pause and stare past figure. As we passed, when the track too close to their animals, the ship would take evasive action, wearing away from the speeding vehicle. And when we became very close to the animals of Drogbas, the animals of theirs took evasive, a sudden movement, and running away from the speeding vehicle. वो उस तेज चल रही कार से काफी दूर भाग जाते हैं. ठीक है. So once I would like to explain the above two paragraphs what I explained in English, that narrator, सबसे पहले आपको बताया गया कि राहु में नरेटर रुके हुए थे. राहु में किसके यहाँ रुके हुए थे? लेमो के घर रुके थे. लेमो एक पहाड़ी इलाके में रहने वाली लड़की है. ठीक है. उसी के घर नरेटर और उसके कंपेनियन डैनियल और कार का ड्राइवर शेटर रुके हुए थे. जब सुबह हुआ तो सुबह में उन लोगों ने वहां से डिपार्चर लिया. डिपार्चर के टाइम कहीं ना कहीं लेमो को ये जानकारी थी, आई मीन शी वाज इन्फॉर्म्ड थ्रू डैनियल दैट द नरेटर इज गोइंग टू कंप्लीट कोरा. नरेटर जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं. क्या? कोरा कंप्लीट करने जा रहे हैं. कोरा क्या होता है आपको बताया गया. कोरा इज अ प्रोसेस इन व्हिच वी मेक अ राउंड अराउंड माउंट कैलाश टू रिसीव और टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शंकर. ठीक है. लॉर्ड शंकर की महिमा अपरंपार हो जाती है कोरा कंप्लीट करने के बाद. सुपरस्टिशियस पीपल डज प्रोसीजर्स इन देयर लाइफ. They complete and set such pilgrimage so that the blessings of gods will be far on them. ठीक है. अब जैसे ही वहां से राव से निकलने की बात आती है तो लेमो ने उनको एक प्रेजेंट दिया, एक गिफ्ट दिया. किसको? नरेटर को. कि you are going to high altitude, so you need some warmer clothes, garments. So she represented a gift of long fur coat which was made of sheep skins, जो कि किससे बनी थी? भेड़ की स्किन से बनी हुई थी. Finally, they took a shortcut from Rahu, और वो शॉर्टकट वहां से लेते हैं. शॉर्टकट लेने के बाद एक बहुत बड़ा सा मैदान उनको दिखाई देता है. इट वाज अ वास्ट एक्सटेंडेड प्लेन. बहुत ही लंबा सा मैदान था. इन दिस दे कुड सी गैजल्स, डियर्स, दे वर निबलिंग, grazing the withered grass, जो कि सूखी हुई घास खा रहे थे. सडनली दे disappeared from there, और वो वहां से चले गए. सेकंड व्यू जो which came into the view of narrator and the companion, it was wild, herd of wild animals in which they could see ass. ठीक है. वो गधों को देखे, उसके बाद फिर घोड़ों को देखे, उसके बाद उन्होंने क्या देखा? ड्रोगबाज देखा, बंजारों को देखा. जो बंजारे अपने जानवरों को चरा रहे होते हैं. कभी कभी औरतें दिखाई देती है, कभी कभी पुरुष दिखाई देते हैं. अब वो जो वेल अपीयर्ड ड्रेस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ड्रोगबाज का, they sometimes pause their ways and staring at the running car. वो कभी कभी रुकते हैं और नरेटर की कार की तरफ घूरते हैं. ठीक है. नरेटर की कार की तरफ घूरते हैं कि ये लोग कौन है, यहाँ जा रहे हैं. दूसरी चीज उन्होंने क्या देखा उसके बाद और जब इनकी जो रनिंग कार है, जो तेजी से चल रही कार है, जब ड्रोगबाज के जानवर के पास जाती है तो वो वहां से बहुत तेजी से अचानक एक मूव लेते हैं और बहुत तेजी से रनिंग कार से दूर भागते हैं, so that they will meet with an accident. Okay, now we passed nomads. Now in the next paragraph the narrator describes that we passed nomads. Nomads क्या है? Dark tents pitched in splendid isolation. अब ये तिब्बत की तरफ जा रहा है. तिब्बतन मैस्टिफ्स की बात होगी इस पैराग्राफ में. He passed nomads, you can say tents of Tibetan people, and pitched of splendid isolation. The tent were well hanged and well, you can say, framed in a splendid, tremendous way. बहुत ही शानदार look था, stupendous look of tents, in which nomads belong. जहाँ पे nomads belong करते थे. Usually with a huge black dog. And we could see a huge black dog at each gate of tents. ये जब आगे बढ़ते हैं तिब्बत में जाते हैं तो तिब्बत में बहुत ही you can say मेड टेंट्स इनको दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड, अच्छी जगह पे आइसोलेट होते हैं. और ये नोमैड्स के होते हैं, जो वहाँ के लोग, जो लोग स्थायी होते हैं, लोकल पीपल ऑफ तिब्बत. And they could see a black dog, you can say,
standing on each gate of tents. टेंट के हर गेट पर एक ब्लैक कलर का डॉग खड़ा होता है. They were known as black Tibetan Mastiff. Okay, now let you know about them. A Tibetan Mastiff standing guard, you can see, and they were standing as if they were guarding. Okay, they were looking after the gate so that no strange man could enter into the tent. ऐसा लग रहा था कि वो गेट पर एक गार्ड की तरह खड़े होते हैं. जो टिबेटन मैस्टिफ होते हैं, ये कुत्ते की प्रजाति होती है. ठीक है, डॉबर ब्रीड you can say. And these bits could cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights. Now, as you can say, the nature of dogs, it's very serious and sharp. Whenever they see a structure or somebody else in their own locality, they take the sight of those people into their eyes. Okay, and they constantly bark upon them. और वो लगातार उनके ऊपर भौंकते रहते हैं until they disappeared from there. जब तक लोग वहां से disappear न हो जाए, वहां से दूर न हो जाए, तब तक वो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं. Okay, they don't stop themselves. वो शांत नहीं होते हैं. So as they become aware of arrivals, the narrator's car, they were taking the sight of theirs into their eyes. वो अपनी आंखों में लगातार इनको घूर रहे होते हैं. अपने आंखों में एक sight नरेटर की कार का कि कोई बाहर से आया हुआ है. And their great job and heads, you can say, these bits would cock their great big heads and they were rising. Okay, they were rising the big heads of theirs. और वो अपने सिर को उठा उठाकर देखते रहते हैं, तब तक देखते रहते हैं जब तक चीजें उनको दिखाई देती है. And aware of our approach and fix us in their sights as we continue to draw closer. जैसे ही हम बहुत close होते हैं, as we drew closer to the mastiffs of Tibet, they would explode into action and they come into action. वो action में आ जाते हैं. As we drew up very closer to them, they come into action. They move and begin to bark at us. वो हम लोगों पर भौंकने लगते हैं, हम लोग की तरफ आने की कोशिश करते हैं. And standing guard. As we continue closer, they would expire action and speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. And when we become very close to them, they suddenly run away from their act. As the bullet reveals from the gun. जैसे गन से बुलेट बहुत तेजी से चलती है, वैसे ही ये कुत्ते अपने टेंट से बहुत तेजी से हमारी कार की तरफ आते हैं. ठीक है, they try to chase the car. वो कार को चेस करने की कोशिश करते हैं. हाँ, आगे देखते हैं. These shaggy monsters, okay, these shaggy monsters, blacker than the darkest night. Shaggy, you can say hair. You could see hair around the neck of dogs. कुत्तों के शरीर पर बहुत ही बारीक बारीक बाल होता है. ठीक है, it's known as shaggy and they are darker than the black nights. और वो बिल्कुल अंधेरी रात से भी अधिक काले होते हैं. Have you seen the breed of Dober? Dober की breed आप लोगों ने देखा होगा कुत्तों की. Darker than the black night and usually wore bright red collar and bark furiously with massive jaws. And वो हमेशा पहने हुए होते हैं. They always are usually wear a colorful red ribbon around their neck. वो बिल्कुल लाल कलर के रिबन में बंधे होते हैं. अपने गर्दन के चारों तरफ उनके रेड कलर का रिबन होता है. And they furiously bark at us, opening their jaws. और वो बिल्कुल अपने क्लास को, अपने चमड़े को दिखा करके कंटिन्यू भौंकते रहते हैं. ठीक है, किस पर? नरेटर पर और इसके कंपेनियन डैनियल या शैतान. जब भी ये कार लेकर अपनी गुजरते हैं and they become very closer, they drew very closer to the mastiff dogs, they become bark, begin to bark furiously at them. And they were completely fearless of our vehicle. Those dogs are completely fearless. They are not afraid of our cars. ठीक है, वो हमारी कार से थोड़ा सा भी नहीं डरते. That they will be meeting with an accident, कि उनका accident हो जाएगा, or something will happen wrongly with them. They are very fearless. वो बहुत ही निडर होते हैं. ठीक है, and shooting straight into our paths, and they come straight into our paths. और वो
हमारे रास्ते में आ जाते हैं, ठीक है, वो जो डॉग्स है वो हमारे रास्ते में आ जाते हैं, एंड causing शैतान टू ब्रेक एंड स्वैप, और ऐसा करने से ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। ड्राइवर कौन है? शैतान, ठीक है, शैतान ड्राइवर है, he needs to brake and swap, make a U-turn from there, और वहां से वो U-turn ले लेता है। Now dog would make a chase from 100 meters or so before easing off, जब तक वो थक नहीं जाते, जब तक वो हमको देखते रहते हैं, तब तक वो हमें चेस करते हैं, ठीक है, वो हमें चेस करते जाते हैं, because they have a great strength of chasing and running, having seen us off the property until we escape from their property, जब तक हम उनके इलाके से दूर न चले आए तब तक वो हमें चेस करते रहते हैं वो कुत्ते, ठीक है। वो जो ब्लैक मैस्टिफ होते हैं वो हमें तब तक चेस करते हैं जब तक हम उनके इलाकों से, ऐसा लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से हम दूर चले आए हैं, देयर इज नो डेंजर और हज़ार्ड टू स्टील और रॉब देयर प्रॉपर्टी, या उनके प्रॉपर्टी को कोई खतरा नहीं है, तब वो कुत्ते हम लोगों को चेस करना बंद करते हैं। So this is very important paragraph. Maybe the questions will be there based on black mastiffs, कि ये कुत्ते क्यों फेमस है और ये कहाँ से आते हैं। Okay, now it was not difficult to understand why ferocious Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs. It was not difficult to understand that why these dogs have become very popular in the imperial courts of China. चाइना के imperial courts में ये जानवर, ये जो मैस्टिफ्स हैं, जो टिबेटन मैस्टिफ है, ये क्यों इतने फेमस है? Because of hunting skill of theirs. ये hunting skill की वजह से बहुत ही फेमस है। और ये कैसे चाइना पहुंचे? Brought along the Silk Road in ancient times as tribute from Tibet. And these dogs were brought from Tibet through Silk Road to China, और ये तिब्बत से चाइना को सिल्क रोड से होते हुए ले जाए गए थे उन दिनों। That is why the name of this chapter revolves around Silk Road. It's a very famous road, और इसी कारण जो चैप्टर है ये सिल्क रोड के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैस्टिफ, ब्लैक मैस्टिफ या तिब्बतन मैस्टिफ क्या होते हैं। They are breed of dogs. They look like black, darker than black night. They are very ferocious, very furious. They bark constantly until they shock strange people in their locality, and they try to chase away even the running or speeding car as well. वो मतलब बहुत ही fearless होते हैं, and they are very famous and popular in China's imperial court for their hunting skills. और अपनी hunting skills के कारण वो चाइना के imperial court जैसी जगहों में बहुत ही popular होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। I hope it's clear to everyone. Now by now we could see the snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. By the now, अब वो कहाँ आ चुके हैं? Narrator describes to us that now they have come to the snow-capped mountain gathering on the horizon. अब वो कहाँ आ चुके हैं? Where they have come, they could see a mountain, which horizon, जो उसका टॉप है, which is covered with snow, जो किससे कवर है? बर्फ से ढका हुआ है। अब कुत्तों की बात बंद होती है, बंद क्योंकि ये जो तिब्बत है इसको ये लोग पास कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं। अब कुत्ते भी इनको चेस करना बंद कर दिए। ओके, ब्लैक मैस्टिफ्स had stopped chasing the narrator and his speeding car. So let's talk about the next paragraph. Now the place where they have come now, it's covered with snow and it is a mountain. और ये एक mountain है। I hope the period or the time duration for this period is over now, and we'll start the next paragraph in next video and tomorrow. So till then,